respect of practical aid and assist the schools to a list of subjects for class 10th and 12th containing the following details are attached to the circular for information. Class, subject code, subject name, maximum marks, type of answer books which will be used. Okay. Whether external practical examiner will be important. No, 10th में. Okay, 12th में आपके पास externals होंगे. External in chemistry. Yes. So chemistry is breakage of 70-30. Okay, fine. And it is practical. Mathematics, you have internal assessment 20 and theory it is 80. You know this mark schemes? No, sir. Achha, you don't know this mark schemes. ठीक है. Okay, I've sent that to your ये क्या बोलते हैं to your WhatsApp. Okay, let me see some. I think there's one more preparation for this. Okay, annual practical examination assessment project assessment for session 2022. I think also. So 1st January से है आपका ये. Okay. Practicals 1st January से है रिफत. Yes, sir. फेब से नहीं है, 1st January से है और 15 Feb से आपका board exams है. Okay, fine. The schools will ensure that the syllabus of practical examination is completed within time. The schools will ensure ठीक है. Action measures. Students, parents must ensure that the subjects of studies are being reflected correctly in the practice should appear. Syllabus and subjects in which practical should appear in the practical examination as per schedule, as no second chance will be in case of any problem. Okay, fine. Okay. Now write the topic. Method of preparation of aldehydes and ketones. Okay. Now, in this, we are going to have 3 different sections. We have some method of preparation from which we can prepare both aldehyde also and ketones. There are some methods of preparation that we will look in the B part, which can be used only to prepare aldehyde. Then there are some methods of preparation which are only for ketones, and we cannot prepare aldehyde from those methods. So write the first method, A. MOP for method of preparation for both aldehydes and ketones. Both aldehydes and ketones. Now, the first method of preparation is from alcohols. Now, I know that it has been a while since we did alcohol chapter, but you will recognize the reagents. The first method is by oxidation. By oxidation of alcohols. Now, we know that 1 degree alcohol if you use weak oxidizing agent, then it is going to convert to aldehyde. Okay, same reactions are there in alcohol chapter also. So for example, if you have OH and you are using here PCC, remember the reagent PCC. For aldehyde, you are only going to use what? PCC. So it will convert itself to double bond O, and this will be hydrogen. Here we have ethanol. This becomes ethanol. Okay, so the number of carbon atom is the same. If you are going from 1 degree alcohol and we use a weak oxidizing agent, it is going to give me aldehyde. Please remember, only weak oxidizing agent, not strong oxidizing agent.
But for 2-degree alcohol, you can use any oxidizing agent, and it is going to give you ketone. And it is going to give you ketone. Okay. For example, here now oxidizing agent can be plenty. The oxidizing agent that you can use in this case, oxidizing agent can be Na2Cr2O7 in the presence of H plus. Then you can have PCC. You can also have CrO3 in the presence of acetone. ठीक है, बस heat मत कीजिएगा. Never add heat whenever you are having aldehyde or ketone. Never add heat. Okay. So for ketone we have multiple choice, but again I will again suggest that you remember PCC for this also. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए that if the questionnaire gives you Na2Cr2O7, then you should understand. यहाँ पे हमने गलती कर दी. एक second. This will be OH and this will be double bond O. ठीक है, please correct कर लीजिए. ठीक है, alcohol to 2-degree alcohol to ketone. So this is propane 2-ol. This is propane 2-on. ठीक है, write some more examples. If you have a double bond, for example, you have something like this, and you have to convert this to ketone. Then in this case, you must use only and only PCC, because PCC is the only oxidizing agent which is not going to disturb your double bond. Okay, so always use PCC. Done, Ripper? Let me know once you're done writing. Done. This? Done. Okay. Yeah, right. Next. B part. Catalytic dehydrogenation. Now, here please see 1-degree alcohol. If you have RCH2OH in the presence of copper and 573 Kelvin, we are going to get RCHO, aldehyde. Then if you have 2-degree alcohol, you have R, C double bond O, some other R dash. Oops, sorry. This will be CH. बार-बार इसको aldehyde कर दे रहा है. Sorry, ketone कर दे रहा है. Give me some time. This CH. Then this is going to convert into C double bond O, some different R dash. This is ketone. So 1-degree alcohol, the reagent in the same, copper at high temperature, 573 Kelvin. Okay, so write a note. Degree alcohol. Gives alkene on treatment with due to the absence of
due to the absence of alpha hydrogen. Okay, as you can see, there is a hydrogen. This is the alpha carbon directly connected to the functional group. Now this carbon has alpha hydrogen, so it is easy to remove this alpha hydrogen. But in the case of 3-degree alcohol, you have, see, in the second 2-degree alcohol also we have alpha hydrogen. But if I take the case of 3-degree alcohol, it will be CS3, carbon CS3, and here you have OH. Okay. Now, as you can see, this carbon atom is not having any. This carbon atom is not having any hydrogen. Now, if I add copper at high temperature, CS3 in the high temperature, then you are going to get this hydrogen, or this hydrogen, or this hydrogen. Any one of the hydrogens of the beta carbon is going to get abstracted by copper, and this OH is going to be abstracted by the copper. So in turn, we are going to get an alkene, which is CS3, carbon double bond CH2, CS3. Now from here, we'll get the OH, and from this carbon atom, we'll get the hydrogen. So we'll get the water molecule from here. Okay, so the product in the case of 3-degree alcohol, it is not aldehyde nor ketone, rather it is an alkene. Please remember that. And write one more note. Instead of copper, we can also use Ag. Please write Ag can also be used. But since Ag is very expensive, it is not used instead of copper. But if in the examination they give you Ag here, so you will always remember that Ag is going to show the similar reaction as that of copper in this case. By the way, Rifat, how was your yesterday's exam? Sir, the paper was good, but then I didn't have much time because I had to do all the 4 subjects. Okay, तो आपको बस लेकिन 4 घंटे होंगे ना? नहीं सर, 3 घंटे. क्यों 3 घंटे क्यों? सर, they said कि 12 o'clock तक सबमिट करना है. अरे नहीं, आप अगले अरे भाई, जो 4 पेपर देंगे उनके लिए 4 घंटा है, 50 मिनट हर एक पेपर के लिए, राइट? Yes. Then 10 minutes is, I think, for submitting that paper, right? नहीं, in Zoom the message was there कि start submitting now, तो चल ठीक है, हम आगे करते हैं. So sir, I can take 4 hours, right? हाँ, obviously भाई, मतलब ये this will be it's absurd, right? अगर जो लोग 3 पेपर वालों के लिए भी 3 घंटे, 4 पेपर वालों के लिए भी 3 घंटे, ये तो मतलब it's not something logical. ठीक है, हम बोल देंगे, ठीक है? जो लोग 4 पेपर, हम बोल देंगे कि जिन लोगों ने 4 पेपर दिया वो लोग कह रहे थे कि 4 घंटे हमको नहीं मिले टाइम. ठीक है. So you are more into biology or maths? Bio. More into biology. Okay. Done here? Yes. Now, right next. Second method of preparation. Now we have saw how many method of preparation, refer, tell me. For aldehyde and ketone. Alcohol and dehydration. So दो देख लिया हम लोगों ने, right? Now this is we have seen 2 in the case of alcohol. From alcohol we have 2 different. इस तरह से ना, you also organize in your head this type of informations. ठीक है, सिर्फ reagent से नहीं होता है. If you how are you going to organize the knowledge? That is also going to tell you how much you are able to retain it. Now I think you have a problem ना कि आपको लगता है exam में retain नहीं होता है. So that is because you have not organized the structure of the knowledge inside your brain. So always remember like this. We have method of preparation of aldehyde and ketones. Like even teachers remember it that way. 3 होते हैं, aldehyde and ketone both. ठीक है? Then we have only aldehyde and then we have only ketone. Now in aldehyde and ketone both, we can do it from alcohol. Now using alcohol, we have 2 different methods. Either using oxidizing agent or we can use copper at high temperature. ठीक है? So keep the things like that. उसके बाद अब सीधा reaction मत यार, context होना चाहिए. Right? There should be some context to every reaction. So that is the context. ये topic क्या है? Right, next one.
from hydrocarbons. Now this is the second substrate that we can use. We can use hydrocarbons to get aldehyde and ketones, right? From hydrocarbons. Now, the first reaction by hydrocarbon is, please write, by hydration of alkynes. By hydration of alkynes. Now, I will show you the reaction first, and then we are going to write the statement of the reaction. So alkynes will have some R, carbon triple bond carbon, and an R dash. Now, whenever there is the word hydration, that means you are adding water. So what is the next reagent? It is water. Now, whenever you have water and you have a double bond, please remember that one of the carbon atom, whenever you have water and a multiple bond, either it is double or triple, one carbon atom is going to get the hydrogen, the other carbon atom is going to get the OH. According to which rule, please tell me, कौन सा rule होता है addition में? Addition में हम लोगों ने दो rule पढ़े हैं, एक होता है Setzev और एक होता है Markovnikov. So tell me, याद है कुछ आपको? रिफत, Markovnikov rule, Setzev rule? नहीं. So addition happens according to the Markovnikov rule. So one of the carbon is going to get hydrogen, the other carbon is going to get the OH. So it's going to get hydrogen, this carbon is going to get OH, but here we are going to use reagents such as this will be done in the presence of dilute H2SO4 and HgSO4. So we have R, C. Now, first of all, triple bond will convert to double bond because one of the multiple bond will break. Here you have OH, and then here you have hydrogen. Here you have the R dash. Now, whenever you see, please don't write now, whenever you see this type of entity, that means this carbon atom, if you look at this carbon atom, it is having a double bond and it is also having a bond with OH. Now, this type of structure, it is very unstable, and these are known as enol. Enol ka matlab kya? The same carbon is having double bond. That means en, and the same carbon is having what? An OH group, hydroxy group. That's why enol. So whenever you have an enol, what happens? If you remember the structure of pi orbitals are made by pure p orbitals. Pure p orbitals, they mix with each other and they form molecular orbitals like this. Here we have positive and here we have negative phase. So here we have some electron density in this case. Here we are having some electron density. And this hydrogen here, it is delta positive. That means it is having a very high degree of electrophilicity. That means it is what? It is very electron poor. And here only we have what? Here only we have the electron density. So this electron density, it shifts towards hydrogen. This shifts towards hydrogen. Okay. Now, since hydrogen is getting electron, hydrogen will leave these electron here, and you will get a quick rearrangement happens here. And you get R, C double bond O, single bond. This carbon already had a hydrogen. It got another hydrogen, CH2, and then here we have the R dash. Okay, so this can be aldehyde or ketone depending on this R. If this R is hydrogen, then it will be an aldehyde. If that R is a ketone, it will be a, if this R is an alkyl group, then it is going to be a ketone. Now, please write, aldehydes and ketones can be prepared by aldehydes and ketones can be prepared by hydration of alkynes in the presence of dilute H2SO4 and HgSO4.
Water adds to alkyne. Forming unstable enol, which rearranges to form aldehyde or ketone. Viput, have you written the reaction till now? Yes, sir. Okay. Wait, next. Addition of water occurs via Markovnikov's rule. Markovnikov's rule लिख दीजिए. ठीक है. What is Markovnikov's rule? Maybe you have forgotten, so please write. देखिए, किसी भी reagent में ना, please listen this very carefully. Refer. ठीक है. Leave your pen aside and please listen. For example, you have HBr. ठीक है. You have HCl. उसी तरह से आपके पास वाटर में क्या होगा? H and OH. तो हर एक, if you have any unsymmetrical reagent, unsymmetrical means both of the atoms are different. That means you have a positive and negative part. So H is the delta positive and this is the negative part. This is positive, this is negative. This is positive and this is negative. ठीक है? याद रहेगा रिफत? Positive, negative part होते हैं. Yes. Okay, what is the negative part in water? What is the negative part in water? H2O में negative क्या है? हाँ, रिफत, what happened? ये देखिए, ये H2O ही तो है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. दिख रहा है आपको? Yes. तो फिर बताइए इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है? हाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा. इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दीजिए. पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट whenever you have a unsymmetrical reagent. Okay, so please write negative part of the reagent attaches to that carbon which has lesser number of hydrogen.
ये सारा सवाल लिखिए। ठीक है, सवाल लिख के बताइएगा, ठीक है। Sir, I wrote the question. Okay. Keep your mic on. Keep your mic on. Okay. Now for the first question, tell me. First of all, you have to identify whether the alkyne here, it is symmetrical or unsymmetrical. How can you identify that? You will look whatever is attached to this carbon atom should be attached to this triple bonded carbon atom. Okay, so you are going to have at least one group attached to each of these triple bonded carbons. So you tell me for the first one, is it symmetrical or unsymmetrical? Symmetrical. Symmetrical. So once it is symmetrical, you don't need to follow any Marconi rule. Okay, you can add the OH into any carbon and you can add the hydrogen to any carbon. So here we have only two carbons. So to one of them, you're going to add H. Now, what is going to happen? Tell me here. Here we'll have double bond or triple bond between the carbons. Tell me when addition is happening. Double bond. Very good. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सारी गलतियां मत कीजिएगा. Here you are going to add the OH and here you are going to add the hydrogen. So we have the hydrogen added. It had already one hydrogen, now it has two hydrogen. Now this double bond will attack here. This hydrogen is going to give the electrons here, and we are going to get H, C double bond O, and single bond CH3. It had two hydrogens, now it has got three hydrogens. Got it? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Now for the second one, tell me, both of these are symmetrical or unsymmetrical? Unsymmetrical. Unsymmetrical. Now you tell me the negative part, यानी कि OH किस पे attach होगा? Let me write. First carbon या second carbon? Second carbon. क्या लिखा है यहाँ पे? Negative part attaches. Negative part of the reagent attaches to that carbon which has lesser number of hydrogen. Yes. First carbon में कितना hydrogen है? 3. कैसे 3 है? 0 है ना? No, yes, sir. 0. समझ में आ गई बात? Yes. है ना, ये दिख रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो 3 है किसके हैं? इस कार्बन के, ठीक है? Yes. हाँ, तो 0 यहाँ पे है और सेकंड में कितने हैं? सेकंड में कितने हाइड्रोजन हैं? 1. ठीक है, बताइए किसमें लगाएं OH को, फर्स्ट में या सेकंड में? First. Very good. So here we'll have OH, double bond, CH and CH. Then again rearrangement will happen. This hydrogen will give the bonds to here, and you will get CH3, C double bond O, CH3. The example जो है, this is important. Here we have what? Propine, and here we have propane 2-ol. तो बिल्कुल इसी तरह से प्रिफर, ठीक है ना? ध्यान से बिल्कुल हर एक चीज को देखते हुए प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द थर्ड एंड फोर्थ वन. अरे नवाल, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, आई एम फाइन. चुपचाप आके बस बैठ जाना है ना, ना सलाम ना कलाम, कुछ नहीं. हाँ, यू जस्ट केम ना नवाल? यस सर. क्यों इतना लेट? सो गए? आई ओवरस्लेप्ट. बहुत बढ़िया. कल टेस्ट दिया था आपने?
Sorry? Yesterday you had a test, right? Yes, sir. Did you give it? Did you appear for the Yes. test? No, I No. don't know. Why? So actually, I have a Your voice is fever. breaking. I cannot hear you. Can you please repeat that, Nawal? What happened? Unable. I had a high today. You had something. You had what? You were sick? What happened? I don't know. Yes, sir. Actually, you were sick. Okay, fine. Mm-hmm. Rifat, you have written the question now. Okay. So Nawal, you can take some screenshots. आप notes complete कर लीजिएगा. Please take the first screenshot. I will wait for 5 seconds. 5, 4, 3. Done, sir. Done, sir. ये एग्जाम नजदीक आने से नींद भी ज्यादा आने लगती है क्या, नवाल? एक सेकेंड. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स भी आना चाहिए जी, ऐसे ले लीजिए. डन नवाल? Yes, sir. चलिए, अब 30 सवाल आ गए. Can you understand what is happening here? Yes, Nawal, tell me. No, not really. Not really. Same. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. The substrate is alkyne. Okay, keep your mic on, Nawal. Okay, I need some quick answers from you. The substrate is alkyne, and we are adding water. Now, water has the structure HOH. Here, hydrogen is positive part, and the OH is what? Negative part. We have multiple bonds in alkyne. Yes or no? Please tell me. Yes, Nawal, sir. keep your mic on. And we have water. So whenever you add anything to a particular multiple bond, there will be addition reaction, and alkynes, they show addition reaction. So we are adding water to alkyne. Addition happens through Markovnikov rule. What is the Markovnikov rule? The negative part of the reagent will attach to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom. Now in the first case, tell me which carbon has lesser hydrogen, first carbon or second carbon? Tell me. Both have same number of hydrogens, yes or no? Same. Same, right? So that means this is, we cannot apply Markovnikov's rule here because this is a symmetrical alkyne. Whenever you have symmetrical alkyne, then you cannot apply the Markovnikov's rule. So you can add the OH to any carbon and the hydrogen to any carbon. Now once we added, see the first carbon we added what? Tell me. What did we add in the first carbon? इसको देख के बताइए इस स्ट्रक्चर को. Sorry, what? Hello, Nawal, I cannot hear you. What did we add for the first structure? फर्स्ट कार्बन में क्या ऐड किया हमने? आवाज ही नहीं आ रही क्या? चलिए ठीक है. First carbon we added OH, and the second carbon we added hydrogen. Now once we get this particular structure in which a carbon atom with a double bond also has a OH, then this double bond attacks on the hydrogen because double bond has electron density just on the top of the nuclei of two different atoms. Now, and H is delta positive, so electron source to electron sink. That means electron rich side to electron poor side. As soon as this hydrogen gets the electron, it loses the electron from oxygen, and we get a C double bond O. Okay, look at the next structure here. In this case, we have propyne. Now, both of these carbon, they have different number of hydrogen atoms. That is why it is a unsymmetrical alkyne.
The first carbon has 0 hydrogen, the second carbon has 1 hydrogen. Now, please remember this carbon, it seems like it is attached to 3 hydrogens, but this hydrogen, these 3 hydrogens are for this carbon atom, not the carbon atom after this hydrogen. Okay? It is for the before carbon atom. So this carbon atom has 0 hydrogen, this carbon atom has, the second carbon has 1 hydrogen. So obviously, according to the Markovnikov's rule, the lesser number of hydrogen is with the first carbon atom, that is why OH attaches to the first carbon atom. And then again, the rearrangement happens, giving the hydrogen to this carbon atom and the double bond with oxygen atom to the carbon atom, which was having hydroxyl group, OH group. So we get propane 2-ol. And then again, for the third structure, you have to identify whether it is symmetrical or asymmetrical. If it is symmetrical, then you don't need to think about Markovnikov rule. You can add OH to any carbon atom and hydrogen to any carbon atom. In the second case also, if it is symmetrical, then don't need to worry about which carbon atom is going to get the hydroxyl group and which carbon atom is going to get the hydrogen. You can add any. But if it is unsymmetrical, then you have to add the hydroxyl group to that carbon atom, which is having lesser number of hydrogen, and the hydrogen to that carbon atom, which is having more number of hydrogen. Once you have added the hydroxyl group and the hydrogen, then you need to do the rearrangement in which the hydroxyl group will change to carbonyl group, and the other carbon atom which was doubly bonded, it will get single bond and one more hydrogen. Okay, so please write this reactions samajh ke, okay? And if you are getting stuck in any one of these steps, please let me know. And Rifat, what happened to 3 and 4? Please send me on WhatsApp. Rifat, are you doing or are you stuck? Sir, I did the fourth one, but I'm kind of stuck in the third one. You tell me, symmetrical or unsymmetrical? Symmetrical. So you add OH to any one carbon atom and hydrogen to any one. दो ही तो कार्बन आटम है ना, कौन से दो हैं बताइए तो, कहाँ पे फोकस करना है आपको, कौन से दो कार्बन आटम्स में होगा? Either 2 or 3. 2 और 3 में, तो 2 में आप OH डाल दीजिए और 3 में हाइड्रोजन डाल दीजिए, then उसी तरह से रीअरेंजमेंट कर दीजिए बस, ठीक है? दीजिए आप करिए, ठीक है ना? पेन चलाइए तभी आपका दिमाग चलेगा, ठीक है? कलम चलाइए, दिमाग चलेगा आपका. Also send the answer for the fourth one. देखिए आपने कैसे किया है. Send it fast but Rifat, ठीक है ना? ज्यादा टाइम मत लगाइए, सोचने में ज्यादा टाइम मत लगाइए, करिए, गलती हुआ फिर से करिए, फिर से जल्दी जल्दी कीजिए लिखिए. बहुत बढ़िया. एक सेकंड, ये थर्ड वाला आपने कंप्लीट नहीं किया ना रिफर? नहीं sir, I'm doing that right. हाँ, फोर्थ वाला सही है आपका. डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए थे रिफत एंड नवान? Yes sir, back questions. एनी प्रॉब्लम इन दैट? कोई ऐसा सवाल जो समझ में नहीं आया हो बिल्कुल? No sir. नहीं ऐसा कुछ?
Sir, in the third one, I don't think I'm getting the right answer. आपने कार्बन नंबर कैसे घटा दिए? वही What's ना, that? आपने स्किप कर रही है स्टेप्स। देखिए जो OH है ना, OH वाले हमने OH का तो बॉन्ड बनाया है, एरोज लगाइए आप, फिर आपको सही से आएगा आंसर। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जहां पे आपके पास इनॉल बनता है, मेक द स्ट्रक्चर वंस अगेन। ठीक है, उसके बाद डैश लगाइए उसमें, OH को इस तरह से लिखिए, देन मूव द कार्बन एटम्स लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद कीजिए आप, आपको समझ में आएगा गलती कहाँ पे हो रही है। Yes, sir, I understand. अंडरस्टूड ना? ठीक है। आपका इसके बाद अमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स बचेगा, राइट? Yes. सिलेबस में आपका हमने कैसे अरेंज किया, हमको भूल गया। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन, चलिए ठीक है, सब कुछ सारी चीजें बाद में है काफी। आंसर भेजिएगा रिफर, ठीक है, फोर्थ का आंसर भेजिए आप। Sir, fourth का sent. नहीं सॉरी, थर्ड का, थर्ड का। अच्छा चलिए आप एक बार कंपेयर कर लीजिए। नाउ सी द CH3 इज एज इट इज, उसके बाद जो कार्बन एटम है वो बन रहा है डबल बॉन्ड, एंड आपका the double bond carbon था that is getting single bond carbon, this carbon atom is getting one hydrogen, और उसके बाद का CH3 as it is है। ठीक है, सॉरी, right, next by ozonolysis of alkenes. Now alkenes is any hydrocarbon with C double bond C, it will have two other groups attached to it. When you add O3, there will be an insertion reaction in which the carbon atom having two groups, that will be as it is, this will be connected with oxygen, another then this oxygen will be connected to the other carbon atom that was here. So this, first of all, this pi bond breaks, this double bond breaks, and there is an insertion reaction like this, and this carbon atom is also having whatever groups was it as it is. Now then you have the oxygen here, one oxygen here, and like this. So this is known as ozonide. So when
alkenes react with ozone, they form ozonide. And after the addition of Zn inside water, Zn and H2O, then there is a cleavage of bond like this, Okay. So as you can see, this double bond is as it is. Sorry, these two groups are as it is, and now carbon and oxygen, it gets a double bond like this. Now here also this carbon atom is having as it is, and it gets what? Double bond oxygen. So directly आप यहाँ से देखिए, अगर आपके पास, if you want to make a direct product, this will be in most of the cases. First step is ozone. Second step is ZnH2O, zinc water. So what you are going to do? You are going to, just a second. You have C double bond C. We are going to break it. Okay. And now once we break it, we will get C double bond oxygen plus ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, ठीक है ना? आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बनाना इसमें बहुत ही आसान है, ठीक है? प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है. Whatever groups are attached as it is, you will just attach the group. You are going to just attach the group. You are not going to change anything. ठीक है? तो बस यहाँ पे ब्रेक किया उसको, separated it apart. ठीक है? देखिए बिल्कुल क्या करना है आपको, इस तरह से ब्रेक किया आपने. This carbon is another. ये कार्बन इधर अलग हो गया और दोनों को क्या मिल गया? Oxygen and oxygen. Can all of you see that? Yes or no, please tell me. Yes. ठीक है? I will break it, separate them, add one oxygen, add another oxygen. Okay. Write the general scheme of reaction for alkene and then write the statement. Treatment of alkene with ozone. Gives ozonide. And further reaction with zinc water. It gives two carbonyl compounds. Okay. So here it is important to remember how to make the product. So we'll focus on that. We'll try to make the product. You don't need to worry about the ozonide. Okay. You just focus on the product that is directly here. Okay. You don't worry about the ozonide. No one is going to ask you about the ozonide here, but they will ask you the product. So it is important that you understand how to make the product. And once you know how to make the product, then the ozonide will also be easy to make. Okay. Ozonide पे focus मत कीजिएगा ज़्यादा, बहुत clumsy हो जाता है. But focus on the product. Break the double bond, separate the two carbon atoms, ठीक है, which are having two different groups attached to them, and जो double bond था उसमें oxygen oxygen लगा दीजिएगा बस. Done everyone? Yes or no, please tell me. Nawal and refer. Yes. Yes. Now right here. देखिए, first example, CH3 single bond, CH double bond, CH2. ठीक है. अब ये बताइए इस कार्बन आटम पे कौन से दो ग्रुप्स लगे हैं, जल्दी बताइए. What are the two different groups attached to this carbon atom? डबल बॉन्ड के अलावा क्या क्या है इसमें, बताइए. What is attached to this carbon atom other than the double bond? नहीं, कितना टाइम लगेगा? जी बोलिए रिफत. CH3. CH3 है, और क्या लगा हुआ है इस कार्बन आटम पे?
एक तो लगा हुआ है CH3 और दूसरा क्या लगा हुआ है बताइए। हाँ, अरे ऐसे कैसे चलेगा काम। नवाल क्या लगा हुआ है दूसरा ग्रुप। यस नवाल। नहीं पता तो जल्दी नहीं पता बोलिए, ठीक है ना, टाइम मत वेस्ट कीजिए प्लीज मेरा। Sir, I don't know. नहीं ये Sir, बहुत गलत बात है लेकिन, ठीक है ना, हम आई एम रियली डिसअपॉइंटेड हियर। इफ यू डोंट नो व्हाट इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम इवन बाय सीइंग द स्ट्रक्चर, आप लोग वर्क कीजिए, ठीक है। यानी कि आप लोग रट रहे हैं चीजों को, आप लोग को बस ये नहीं समझ में आ रहा कार्बन एटम क्या लगा हुआ है, वो नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जल्दी बताइए, दोनों माइक ऑन रखिए, दोनों दोनों माइक ऑन रखिए, बताइए कार्बन कितने ये बताता है, कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन। माइक ऑन कीजिए 4. नवाल। यस, हाउ 4. मेनी बॉन्ड्स कैन कार्बन मेक। 4. ठीक है, ये कार्बन कौन कौन से कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, जल्दी बताइए। लाइंस कितने दिख रहे 3. हैं इसके आसपास, कितने लाइंस दिख रहे हैं, 3. 3 दिख रहे हैं। तो चौथा कौन सा होगा। और ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग को ये नहीं पता Sir, कि hydrogen, yes. नहीं हाइड्रोजन नहीं, बहुत ही अफसोस की बात है रिफर, अभी आपको समझ में आ रहा तो कोई ये नहीं। इसमें कौन से दो ग्रुप्स लगे हुए हैं बताइए, व्हाट आर द टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड अदर देन द डबल बॉन्ड। निहायत ही अफसोस की बात है अगर आप लोग को पहली बार में नहीं दिखा तो, ठीक है। खुद समझिए कि क्या प्रॉब्लम है आप लोग, मतलब अगर आप लोगों को अभी तक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत दिन के बाद स्टार्ट हुआ है, इस वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको बहुत, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो जाके नॉमेनक्लेचर कीजिए, नंबर ऑफ, अगर आपके पास वो है ना, विल हैव वन PDF बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वाला जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन ये करते हैं, प्लीज दोबारा से उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग का टच छूट गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो प्लीज रिवाइज कीजिए उसको। नाउ व्हाट आर द टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, टेल मी। ये सेकंड Hydrogen. कार्बन में कौन कौन से हैं जी, जोर से बोलिए प्लीज। यस नवाल टेल मी। Hydrogen. हाँ, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, दिस इज लाइक दिस, हाइड्रोजन एंड अनदर हाइड्रोजन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, वन ऑक्सीजन हियर, द अदर ऑक्सीजन हियर, प्लस कार्बन, दिख रहा है आपको सबको, ये सोनो प्लीज नहीं, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, आया ना, जल्दी बताइए। Yes. Yes. अगर गलती हुई ना, बिल्कुल हम बता रहे, बहुत डांटेंगे हम, बहुत ही ज्यादा डांटेंगे, बहुत ही ज्यादा, इतना ही गुस्सा आ रहा है ना हमको, तो हम क्या बताएं। हाइड्रोजन कैसे नहीं दिखा आप लोगों को, गुस्सा तो आते ही जा रहा है हमको तो गुस्सा, ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से कीजिए, ठीक है ना, अब गुस्सा ना आए हमको। हमको तो डर लग रहा है ऑनलाइन स्ट्रक्चर बनाने में, पता नहीं आप लोगों को याद भी है कि नहीं याद है, ठीक है। इसका पहले आप लोग प्लीज ना इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, कितने कार्बन से हाइड्रोजन सब कुछ खोल खाल के बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे वी आर हैविंग O3 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में ZnH2O। अगर किसी ने कोशिश की है सीधा इसी स्ट्रक्चर से बनाने की, सही बना लिया तो बहुत अच्छा, नहीं सही बनाया तो फिर तो डांट मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने खोल के स्ट्रक्चर बनाया, उसमें अगर गलती होगी तो हम समझा देंगे, लेकिन अगर जो 30 मार खान बने आप लोग कि बॉन्ड स्ट्रक्चर से ही सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिन हो गया काफी आप लोग को पढ़े हुए, उसके बावजूद फिर तो हम डांटेंगे, बहुत डांटेंगे, बेइज्जत कर देंगे बिल्कुल हम। तो पहले इसको खोल के बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बाद और एक स्ट्रक्चर और ले लीजिए आप लोग। फोर्थ वाला हम बनाएंगे, फोर्थ वाला आप लोग मत कीजिएगा, मतलब कोशिश भी मत कीजिएगा।
चलिए शुरू हो जाइए जल्दी, लेकिन ठीक है ना? 5 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है? 6 मिनट का टाइम है। चलिए, आई एम गिविंग यू गाइस 6 मिनट्स। कीजिए इसको। 3 सवाल करने हैं आपको, 1 2 3 4 तो हम करेंगे। यू नीड टू ब्रेक द डबल बॉन्ड एंड ऐड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड ओ बस कर दे रहा हूं, तो डबल बॉन्ड सी को काटिए, डबल बॉन्ड ओ लगाइए। कर लेंगे हाँ या ना? बताइए, नहीं तो फिर हम बता देंगे आप लोग को। कर लीजिएगा। रिफत एंड नवाल, टेल मी। Yes. नवाल, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. थ्री मोर मिनट्स, ठीक है?
चलिए प्लीज सेंड मी आंसर्स व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ, नवाल एंड रिफत. रिफत सेंड योर आंसर प्लीज. रिफत कर लिया आपने कि नहीं किया अभी तक? नहीं सर, 1 मिनट. नहीं, आप भेज दीजिए, जो भी किया आपने भेज दीजिए, ठीक है ना. उतना भी अगर आपने सही किया होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर उसमें भी सही नहीं किया होगा तो फिर आगे भी सही नहीं कर पाइएगा, ठीक है. आप आंसर्स भेज दीजिए. अच्छा एक और चीज बताइए रिफत, टेस्ट में आपने देखा होगा आखिरी में बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह थे, राइट? यस, असाइनमेंट. वो असाइनमेंट था, राइट? वो क्वेश्चन पेपर में नहीं था, वो तो साफ समझ में आ रहा था ना हाँ कि वो सर. क्वेश्चन पेपर का पार्ट नहीं है. हाँ सर. हाँ, ठीक. ठीक है, जस्ट सो वन. एक का हमने आंसर देखा, उसने वहां पे सारे ये में हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, सारी चीजें. देखिए, है ना, आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया नहीं, ठीक है, हम बोल रहे थे आपको रिफर, है ना, और उसमें आपने गलती कर दी. पहला तो ठीक, पहला तो हमने किया था. इसमें से आपने सिर्फ दो ही, एक ही किया है, ठीक है ना. गलत है रिफर, जितना भी आपने किया है गलत है. प्लीज कीप योर माइक ऑन. आपने जब ये स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH2 CH, ये बनाया आपने, यस. यही बनाया आपने. देखिए नहीं नहीं सर, आई टुक. हाइड्रोजन में आपने मिसअप कर दिया. यस. यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्यों दिया हमने, बताइए आप. दो हाइड्रोजन क्यों नहीं दिया वहां पे हमने? यस रिफर, टेल मी. नहीं पता आपको? नहीं. यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्यों हैं जबकि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है? नहीं पता आपको? सर, द डबल बॉन्ड. हमेशा याद रखिए, जब भी हाइड्रोजन की बात आएगी, कितने हाइड्रोजन हैं, इसका रिलेशन होगा कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. क्या रिलेशन होगा उसका, बताइए. कार्बन कैन बॉन्ड 4 बॉन्ड. कार्बन कैन हैव ओनली 4 बॉन्ड्स. तो नाउ कार्बन इन दिस केस अगर आप देखिए तो एक बॉन्ड इसका पिछले वाले कार्बन के साथ है यहाँ पे. देन इट हैज 2 डबल बॉन्ड्स. कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के?
3, कितना बचा? 1, वो कौन बनाएगा? एक बॉन्ड जो बचा वो किसके साथ बनेगा? जोर से बोलिए। कार्बन के साथ। नहीं, फिर से याद नहीं आपको? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपके पास हमने भेजा है ना वो पीडीएफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला रिफत? यस बिल्कुल ध्यान नहीं है आपको? सर, H के साथ। नहीं तो अच्छी बात नहीं है ना, ऐसे अगर आप भूलते रह जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना? एक चैप्टर तो नहीं है याद रखने के लिए, थोड़ा ना थोड़ा कम से कम रिवाइज करना चाहिए था आपको। फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है? इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड किसके साथ है बताइए तो जरा। दिस रेड बॉन्ड इज विथ, टेल मी, कौन दो एटम्स के बीच में है? CH2CH। नहीं, CH2 तो एटम नहीं है ना। एटम तो एटम होगा, कार्बन होगा एटम, या हाइड्रोजन होगा। तो बताइए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है या कार्बन के साथ बॉन्ड है? हाइड्रोजन। नहीं, गलत है, ठीक है? कार्बन के साथ बॉन्ड। नहीं, दो ही ऑप्शन थे रिफत, ठीक है? वो और दूसरा, इतना कोई टफ सवाल नहीं था कि मतलब आप एक बार गलत आंसर दें फिर उसके बाद ओह अच्छा आंसर, इतना कुछ ही नहीं था, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आपको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज वो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना? थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तुरंत आ जाएगी चीजें। हम लोगों ने एक बार किया हुआ है, ठीक है? इस वजह से हम बोल रहे हैं प्लीज, लेकिन कर लीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो आपको दिख रहा है कितने बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है रिफत, कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि बॉन्ड किसके साथ बना है, राइट? ठीक है? तो रिएक्शन अभी दूर की बात है, आप प्लीज उसको कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये सारे रिएक्शन आप जो है ना फिर से दोबारा कीजिएगा, बिना देखे, घर जाके बिना देखे आपको करना है ये सारे रिएक्शन, तभी आएंगे आपको, वरना आज का लेसन जाया चला जाएगा आपका। बैठिएगा क्लास के बाद, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला या तो फिर आईयूपैक नोमेनक्लेचर, दोनों में से कोई एक भी कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा, ठीक है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का पीडीएफ है ना आपके पास? आप उसको यस जवाब ही नहीं दे, हाँ उसको या तो पढ़ लीजिए आप, या फिर आप नोमेनक्लेचर का कर लीजिए कुछ, तो आपको आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जितने भी रिएक्शन है फिर से दोबारा पढ़िएगा, फिर से उसके बाद जितने रिएक्शन खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, हियर वी विल बी हैविंग CH3, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कार्बन कितने हैं उसको देखना है, ठीक है? जल्दी जा रहे हैं जरूर, लेकिन 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 कार्बन एटम। कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल या डबल या ट्रिपल? टेल मी। सिंगल। सिंगल, तो सिंगल रखा आपने। डबल 2 और 3 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल डबल या ट्रिपल? सिंगल। और 3 और 4 के बीच में? डबल। डबल, ठीक है? अब ये कार्बन के साथ बॉन्ड कर दिया हमने। नाउ कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है जल्दी बताइए? 4। अभी इसने कितना बनाया हुआ फर्स्ट कार्बन एटम? 1। तो बाकी के 3 किसके साथ बनाएगा ये? हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन एटम बताइए, कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, क्यों 2 होंगे? क्योंकि 2 बॉन्ड्स बने। दो बॉन्ड जो बना रहा है कार्बन किसके साथ बना रहा है? फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन में बताइए कितने हाइड्रोजन होंगे? 1। क्यों 1 होगा? 3 बॉन्ड्स। और फोर्थ में? 2। ठीक है, तो आपके पास होगा यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपने किया इसको ब्रेक, यहाँ पे डालिए O, यहाँ पे डालिए O। बस इस कार्बन के पास 2 ग्रुप्स है ना, आपने एक तो यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे किया, वो समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो हाइड्रोजन है आपका, दूसरा क्या है, किसके साथ बॉन्ड है बताइए? एक हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं आपको रिफत, ये बताइए आप। यस। ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4, कौन सा कार्बन है ये? 3। ठीक है, अब बताइए इसके साथ कौन लगा हुआ है? 3 के साथ CH2 लगा हुआ है। यस। उसके बाद क्या लगा हुआ है? CH2 CH2 के बाद क्या लगा हुआ है? और CH3। सिंगल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना? यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड कार्बन। या तो आप ना इसको ऐसे देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से सिर्फ उन 2 कार्बन को देखिए जिसमें डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C। अब आपके पास ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। थर्ड कार्बन में लगा हुआ है CH2, उसके बाद लगा हुआ है CH3, और एक क्या ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन। फोर्थ कार्बन में दोनों क्या है आपके पास, हाइड्रोजन। दोनों को आपने ब्रेक किया, आपको
एक कार्बन से मिला, ये रहा CH2 और ये रहा CH3, ठीक है, हम ऐसे बना दे रहे हैं। ये रहा आपका हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O। कार्बन को आप नाम नहीं दीजिए, लेकिन हाइड्रोजन को ना आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या माना जाएगा, दिस विल बी CH3। ऐसे अगर कुछ रखा हुआ है तो वो CH3 है। आपने उसमें हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया, दैट मींस दिस इज जस्ट अ बॉन्ड नाउ। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं है, अभी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। समझ में आ रही बात, Yes. ठीक है। And then here we are going to have C, hydrogen and double bond O, ठीक है। Yes. हाँ यहाँ जल्दी बताइए, सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, जस्ट अ सेकंड। हाँ यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, ठीक है। आपने यहाँ पे सीधा डबल बॉन्ड O लगा देना है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। Yes. आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इन दो डबल बॉन्ड्स पे ना। अब यहाँ पे देखिए, ये कार्बन आपका जो है, इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, बताइए। 1. 1 हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन के साथ आपने लगा दिया एक हाइड्रोजन। और दूसरा ग्रुप क्या लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, बताइए। Hydrogen. नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हाइड्रोजन नहीं होगा, कुछ नहीं लिखा है तो क्या होता है, Carbon. बताइए। कार्बन Carbon. होता है। तो साल दिया रही हैं आप, बिल्कुल याद ही नहीं क्या आपको, अभी बताया था हमने। हाय हे, CH3। अब फिर डबल बॉन्ड O, बात आ रही समझ में। Yes. चलिए अब इसमें बताइए आप सबसे पहले, इस कार्बन आटम के पास एक तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, जो भी डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड जहां पे भी है, ये तो आपने कर दिया। अब बताइए ग्रुप्स कौन से लगा हुए हैं, इस कार्बन में कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, जल्दी बताइए। बताइए Um. जी, ये ग्रुप कौन सा होता है। Carbon. हाँ, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, CH3 वाला ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल CH3। बोलिए कौन सा ग्रुप होता है, अगर ऐसे लगा हुआ है तो। Methyl. CH3. ठीक है, दोनों मिथाइल 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 लगा हुआ है, हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताइए आप। Yes. इस कार्बन आटम के लिए क्या करेंगे, अगेन C डबल बॉन्ड O। अब बताइए कौन सा दो ग्रुप लगा हुआ है, CH3. CH. अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपने ब्रेक कर दिया, इसको आपने ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाँ या ना। Yes. अब ब्रेक हो गया तो रिंग भी ब्रेक हो गया, रिंग तो नहीं बचा अब, राइट। Yes. अब क्या होगा आपके पास, दिस विल नाउ बी अ ओपन चेन स्ट्रक्चर। नाउ ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये बताइए, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, Methyl. मिथाइल ग्रुप है। तो ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप 7 कार्बन आइटम का सिंगल ऐसे ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबर कर दीजिए इसको आप, 1 2 3 4 5 6 एंड यू हैव 7, ठीक है। अब बताइए, सेकेंड कार्बन आइटम डबल बॉन्ड के साथ था, हाँ या ना। हाँ. तो डबल बॉन्ड के साथ था, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रहेगा, करेक्ट है। Yes. अब बताइए, अब डबल बॉन्ड जो दूसरा होगा, वो दो कार्बन आटम्स के साथ डबल बॉन्ड लगता है ना, दूसरा कार्बन आटम कौन सा होगा जिसमें डबल बॉन्ड लगेगा, 7. 7th कार्बन आटम पे डबल बॉन्ड लगेगा। अब बताइए यहाँ पे, अभी तो 3 ही बॉन्ड हुए है ना, चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, Methyl. फोर्थ बॉन्ड विल बी, फिर से बोलिए, सुन नहीं पाए हम, किसके साथ होगा, Hydrogen. आई बात समझ में। Yes. अगर जो गलती किए हैं आप, हम देंगे सवाल बाद में, कल जब आइएगा आप तो, ठीक है। अगर जो आपने गलती किया फिर बताएंगे आपको।
लिख लिया आपने रिजल्ट, हाँ या ना? सर 1 month. ठीक है, डन। ठीक है, अब देखिए इतना तो आपने कर लिया। ठीक है, 2 रिएक्शन पढ़ाने वाले थे लेकिन कार्बन हाइड्रोजन आपको आ नहीं रहा था, उसकी वजह से आप इसको कॉपी कीजिए। ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, ये 2 रिएक्शन से, नेम रिएक्शन से बिल्कुल अभी आप रिवाइज करने बैठिएगा ही, साथ साथ इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब आप आइएगा नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम बता देंगे। बहुत ही आसान Yes. रिएक्शन है, दोनों नेम रिएक्शंस है। ठीक है, इसके हम सवाल जब कल स्टार्ट करेंगे क्लास तो कुछ हम सवाल देंगे, उसमें ये रिएक्शंस भी रहेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका, रोजनमैन रिडक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन टॉपिक